Welcome, my dear students. Now, see here, Unit 4, Sea Song poem. Okay, so let's start this sea song poem. So, I found a sail, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. I found a sail, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the cell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. You would find a nice big cell, and I hear it singing too. So what is this poem means? This poem like एक जो boy है उसको मिला cell. Okay, understood. A curly one. ओके लाइंग ऑन द सैंड कहाँ पे मिला सैंड के सैंड में पड़ा हुआ ठीक है आई पिक्ड अप ओके कह रहा है मैंने उसको उठाया ठीक है कर्ली टाइप का था मैंने उसको उठाया और अपने घर लेके गया एंड टुक इट होम कोल्ड इन साइड माई हैंड उसके बहुत घबरा भी रहा था वो मम्मी लुकड एट इट एंड देन सी हेल्ड इट टू माई ईयर वो डर गया उसकी मम्मा ने देखा और उसके कान खींचे ठीक है एंड फ्रॉम द सेल देयर केम अ सॉन्ग और उसमें से क्या हुआ वॉइस निकली ठीक है सॉन्ग वॉइस निकली एंड सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर बिल्कुल क्लियर वॉइस आई वॉज सरप्राइज मैं सरप्राइज था आई लिसनड हार्ड जब मैंने उस वॉइस को सुना बट इट वॉज रियली ट्रू ये तो बिल्कुल सच है आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग सेल ओके क्या मैं विश करता हूँ कि आपको भी इस टाइप का बिग शेल मिले एंड हियर इट सिंगिंग टू और मेरी तरह आप भी गाना सुनो लुक एट दिस पिक्चर ऑफ दिस शेल ओके SHELL understood completely cell held surprise curly hair okay see here so these are new words and here is a question answer so these question answer I will discuss later now move on to the chapter what is the next chapter and that chapter name is that chapter name is A Little Fish Story. There are a great many million fish in the seas, but the story is about just one of them and a very small one at that. Okay, तो बहुत सारे मैनी मिलियन फिश रहते थे सीज में लेकिन ये जो स्टोरी है ये केवल एक की है जो बहुत छोटी थी नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंट मतलब उस लिटिल फिश के पास सब कुछ था ठीक है बट ही वॉज नॉट हैप्पी लेकिन वो खुश नहीं थी ठीक है लेकिन वो खुश नहीं था यू विल लाव व्हेन आई टेल यू तुम हंसोगे अगर जब मैं बताऊंगा वाई ही वॉज नॉट कि वो खुश क्यों नहीं था ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था तो इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ ऑफिस उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या था हार्ड था ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन बोलता रहता था इफ़ आई वर ओनली लार्जर अगर मैं बड़ा होता ना हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी तो मैं कितना हैप्पी होता एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट और वो सोचता रहता वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल ठीक है एक दिन क्या करता वो स्विमिंग करता अपने साथ वालों के साथ ठीक है जो पूरे झुंड के साथ जैसे स्कूल कहते हैं एंड थिंकिंग नो डाउट सेम हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देम ही कि ये सब मुझसे कैसे मतलब इतने बड़े और मैं कैसा हूँ व्हेन सडनली तब क्या होता है व्हेन सडनली विद नो वार्निंग कोई भी वार्निंग नहीं मिली देखो कुछ भी नहीं पता चला उन्हें दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट और उन्होंने क्या पाया कि वो एक नेट में फंस गए जैसे कि एक कौन सी कॉल होती है वो जैसे कि फिश को पता चलता है कि वो डेंजर में है ठीक है तो वो वाली कॉल उनको नहीं मिली तो उनको कोई वार्निंग नहीं मिली और वो क्या हुए कहाँ फंस गए ग्रेट नेट में देयर वॉज मच वॉन्डरिंग ओके देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग वो वहाँ पे बस फ्लॉन्डरिंग करते रहे उधर से भटकते रहे तड़पते रहे स्प्लैशिंग करते रहे द नेट वॉज ड्रॉन अप ओके जो ड्रॉन था उसको खींच लिया गया था वाटर से इनटू द सनलाइट में ठीक है एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग
emptied into the boat, उन सबको उठा के उन्होंने किस में डाल दिया, बोट में. एंड द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, जो उसमें थी रिगल्ड कर रही थी वो भी, ठीक है, रिगल्ड कर रही थी थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर. और रिगल्ड करते 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 वो कहाँ पहुँच गए, क्लियर वाटर में, ठीक है, फिर से वो वाटर में चले गए. हाउ गुड इट फेल्ट, उसे कितना अच्छा लगा. ही स्वैम हेयर, वो वहाँ पे स्वैम करने लगी, हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर. ओके, एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम, उन्हें पता था, है ना, सबको ही पता था. वेल ऑल द रेस्ट ऑफ इज लाइक यू, अब उसकी जो है लाइफ अच्छी है. सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश. ठीक है, अब वो कभी नहीं बोलती थी कि मैं जो हूँ काश लिटिल, क्या अब उसने क्या किया, अब वो कभी नहीं बोलती कि काश मैं लार्जर होती. अब वो बहुत खुश थी, ठीक है, अब उसने कभी नहीं बोला, वो बहुत खुश थी कि वो एक लिटिल फिश है. अंडरस्टूड. देखो सारी फिश पकड़ी गई, लेकिन जो वो बेचारी वो जो फिश था वो क्या हो गया था, वो वहाँ से छूट गया था, ठीक है ना, रिगल रिगल करते हुए वो कूल वाटर में गिर गया. Okay, understood completely. So here new words, million, floundering, masses, haul. Okay, howl, contented, splashing, emptied, wriggled, and warning. Okay, so let's discuss this question answer. Be careful. Okay, so now firstly I am telling here question number 1. Okay, which is that the poem for sea song. Sea song I have already explained. So where did the child find the seashell? So the child found the seashell on the sand. Very good. What did the child do with the shell? The child took the shell to his home. कहाँ लेके गया था वो? Home. What did the child hear? The child heard a sweet clear song from the shell. क्या सुनाई दिया था? बिल्कुल sweet and clear song. Okay. So here pick the rhyming words from this box and pair them in the spaces below. And the first one has been done for you. Like found, cold. Okay, you can see here. So what is the rhyming word? Found. Okay, then you can see sound. Found, sound, like a rhyming. Andy. Cold, bold. Took, look. Sand, hand. Mummy, tummy. Okay, now here a sea song. So here is the fill in the blanks with the opposite word choosing from the box below. The first one is done for you. Okay, तो यहाँ पे आपको opposite word दिए हैं. Found, lost, took, gave, big, small, came, went, cold, hot, sweet, bitter, tall, short. Okay, found, lost, hard, soft, inside, outside, pick, drop, true, false, curly, straight. Yes, curly means क्या होता है? मुड़ा हुआ, जैसे हमारे बाल कभी होते हैं, कर्लीज होते हैं. ओके, नाउ हियर इज द choose the right words. The sea is very big, not big. Okay, here's a printing mistake. Nessie, you cannot see the other side. You can cross the sea. You can cross it in a ship. Okay, now see here, match the phrases with the pictures. Okay, a bird singing, a cow mooing, a phone ringing, a dog barking, a cock crowing. Okay, cow क्या करती है? मूवी करती है ना? Yes, मूवी. See here, next one, a little fish story, question answers. How many fish are there in the sea? Yes, there are millions of fishes in the sea. Why was the little fish unhappy? The little fish was unhappy because he was very small. What happened to the fish one day? The fish was caught in the mesh of a net, right? So why was the fish thankful to be a little fish? The fish was thankful to be a little. This was only because of its small size. He was able to escape from the net. Understood? Okay, now imagine you are a little fish. Describe what you might see around you. So क्या क्या करोगे आप? There is blue water all around me. I am swimming with other fellow little fishes. Okay,
Now here the in your class talk about the time you were caught doing something you were not supposed to do. You can discuss in your own language as well as in English. So there are millions of faces in the sea, you can see like this, okay, and you can do this activity by yourself, okay. इसमें क्या बोला गया कि अपनी क्लास में आपको बात करनी है कि कैसे, जैसे इफ़ यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू, अगर आपको किसी ने पकड़ लिया सपोज, तो आप क्या करते. यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश. तो देयर आर मिलियन ऑफ फिशेस कहाँ होती है, सी में होती है, तो आपको पता है, राइट. So look at the pattern and the fill in the blanks. Look, looked, talked, talked, picked, picked, whizzed, okay. Barked, barked, wanted, pulled, helped. Fill the blanks with the right word from the box. So a glass of water, a bunch of flowers, a herd of cows, a pack of wolves, a sheet of paper, a box of matches. Okay, now look at the following sentence. If I were only larger, how much happier I could be. Make more sentences like this using the words in the box. If I were only thinner, how much happier I could be. If I were only smaller, how much happier I could be. If I were taller, how much happier I would be. If I were younger, how much happier I could be. If I were clever, how much happier I could be. If I were older, how much happier I could be. Great. Now here, choose the right words. Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Venkatesh thinks Mahesh is crying. And Mahesh is singing a song. A song is in English. Okay, here singing or crying, song time. Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asks. Mahesh says, I'm not crying. I'm singing an English song. Very, very easy. Yeah. So, okay. So I'll explain. Mahesh sings a little. Mahesh क्या कर रहा है, गाना गाता है एक little सा. Venkatesh looks at him. उसको देखता है. Why are you crying? क्यों रो रहे हो महेश? He asks. महेश कहता है, आई एम नॉट क्राई, मैं रो नहीं रहा, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, में तो गाना गा रहा है इंग्लिश में, राइट. या सो दिस वन इज योर एक्सरसाइज. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज दिस थिंग एंटायरली. ओके.